आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तानी लॉयर्स कनाडा में लॉ प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर हैं तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका कार अपनाया जाएगा। इसके लिए मैंने दावत दी है शुमाइला शौकत को, जिनका ब्रैम्पटन में अपना लॉ चेंबर है। वेलकम टू माई लाउंज। मेरा नाम हुमा है। शुमाइला शौकत ने पेशावर यूनिवर्सिटी से LLB किया। उसके बाद वो इस्लामाबाद आ गई और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज़ के लॉ ऑफिस के साथ वाबस्ता रहीं, और फिर उन्होंने कैनेडियन इमिग्रेशन ले ली। कनाडा जाकर उन्होंने मुख्तलिफ इम्तहानात पास किए और आज वो बहैसियत सॉलिसिटर और बैरिस्टर वहाँ काम कर रही हैं। उनका अपना लॉ ऑफिस है जिसका नाम शौकत लॉ ऑफिस ब्रैम्पटन है। मैं उसका फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उनका ईमेल एड्रेस भी दे दूँगी। अगर आप चाहें तो उनसे इस वीडियो के नीचे कमेंट में कोई सवाल पूछ सकते हैं, और अगर चाहें तो डायरेक्ट उनसे उनके ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। और आप प्लीज़ उनके फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिए। तो अब आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराते और उस गुफ्तगू की तरफ चलते हैं जो हमने शुमाइला शौकत से की। अच्छा शुमाइला, हमें ये बताइए कि अगर पाकिस्तान से कोई पाकिस्तानी वकील, कोई लॉयर कनाडा आए तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप किन मराहिल से गुजरना होगा? उसके 3-4 स्टेप्स हैं जो उनको करने पड़ते हैं। लकीली पाकिस्तानी लॉयर्स के लिए उन स्टेप्स में जो इनिशियल स्टेप्स हैं उनके लिए उनको PR वीजा या कनाडा में होना या कोई स्टेटस होना जरूरी नहीं है। So first step is NCA. You have to get your credentials upgraded or acceptable in here in Canada. Then second step is to go for your bar exams. And the third step is to start up your own practice or look for a law job. So that's pretty much whatever it is. अच्छा, तो NCA क्या है? How do you go about NCA? Which is the first step? First step is NCA. हमारी पाकिस्तानी degrees are not acceptable in Canada. तो आपको कनेडियन स्टडीज के जो JD ने यहाँ पर कहते हैं या LLB का जो प्रोग्राम है उसकी इक्वलेंट आने के लिए आपको अपने जितने भी एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं उनको अपग्रेड कराना पड़ेगा टू द स्टेटस और टू द लेवल ऑफ कनेडियन लॉ. Luckily we do all the British laws there, so which is acceptable in Canada as well. Obviously कुछ ऐसे लॉस हैं जो हम पाकिस्तान में नहीं पढ़ते, जैसे कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कनेडियन फाउंडेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कनेडियन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ कनाडा. तो ये वो चीजें हैं जो हमें वहाँ पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती. तो that is something that they would like to look into your credentials, that whether you do qualify to go for a bar exam or no. So that is the basic purpose of your assessments. उसमें आप अपनी ओरिजिनल डिग्री सबमिट कराते हैं और वो उनको असेस करते हैं. इसके साथ वो आपका रेज्यूमे मांगते हैं, आपके प्रैक्टिस एक्सपीरियंसेस मांगते हैं, आपकी HSC की अटेस्टेशन मांगते हैं, और आपकी यूनिवर्सिटीज और HSC को डायरेक्टली कैनेडियन लॉ सोसाइटी को लिख कर देना पड़ता है कि yes, the whole degrees and whatever she's holding the degrees is valid and genuine. So then जी आप कहिए. And then they give you the recommendations. अच्छा, you do like they can give you recommendations कि आप 5 subjects तो उनके mandatory हैं जो मैंने आपको बताए हैं: Canadian Constitution, Foundation of Canadian Constitution, Administrative, Canadian Professional Responsibility. 5 subject इनके mandatory हैं that you have to complete anyways. Apart from that, if they think कि आपने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, फॉर एग्जांपल टॉट्स नहीं पढ़ा या इनका कोई और लॉ नहीं पढ़ा, तो वो फिर आपको 8 to 12 सब्जेक्ट्स साथ में दे देते हैं टू कंप्लीट इट आउट. Then you have to complete that either by exams or by going to a university or college or programs that they have. अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि जैसा पाकिस्तानी लॉयर्स ने तो कैनेडियन बेसिक कैनेडियन लॉज नहीं पढ़े हुए, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा,
तो जब वहां वो जाएंगे तो फिर वो उसे किस तरह क्योंकि जाहिर है जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं वो तो डिफरेंट हैं, उनमें ये लॉज शामिल नहीं हैं, तो व्हाट डू दे हैव टू डू इन ऑर्डर टू रीच टू दैट लेवल? They can do either by going to a law school, to enrolling different programs. They have some different programs for international lawyers. So there are two ways to come up to the standards of Canadian Law Society, especially the NCA recommendations. एक तो यह है कि आप NCA चैलेंज एग्जाम्स अपीयर हो जाओ, उसमें आप सेल्फ स्टडी करो और आप एग्जाम अपीयर करो और उनको पास करो, जितने भी सब्जेक्ट्स उन्होंने आपको दिए हैं, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 12 हैं. I appeared in 5 exams. And I did my self-study and I appeared in challenge exams and I passed it. वो हर month में एक दफा होते हैं, like 12 times in a year. आप उसमें जा सकते हो. या फिर यहाँ पे different programs हैं, जैसे University of Toronto कराती है LLM in internet for internationally trained lawyers. उसमें वो 5-6 सब्जेक्ट्स वैसे ही कवर करते हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो वैसे भी कवर करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसमें पढ़ा लिया जाता है, उसमें टॉट्स पढ़ा लिया जाता है, उसमें कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा लिया जाता है, ये सब कुछ पढ़ा देते हैं. लेकिन उसमें 100% ये सारे रिकमेंडेशन कोर्सेज कवर नहीं होते. सो यू कैन गो फॉर दैट प्रोग्राम. फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैकगिल में कुछ प्रोग्राम्स हैं फॉर इंटरनेशनली ट्रेन लॉयर्स, वो आप कर सकते हो. So you can do for that, or you can mix and match. Yani कि you can go for some papers for your self-study and appear an exam, and some you can go by some programs in universities here. अच्छा, तो जब ये NCA का स्टेप पूरा हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बार एग्जाम. जब आप NCA हाँ, एग्जाम आपको दे दी जाती हैं, उसके बाद आप बिल्कुल इक्वल स्टैंडिंग पर आ जाते हो एज एनी JD ग्रेजुएट ऑफ कनाडा. बाय कनाडा आई मीन थ्रू आउट कनाडा. बार एग्जाम्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट हैं. मैं ओंटारियो में हूँ. ओंटारियो की बार एग्जाम्स होते हैं, इनके 2 पेपर्स होते हैं बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर के. वो 8 घंटे के वो एग्जाम्स होते हैं. 4 आवर्स का पहला पार्ट होता है एग्जाम का, और 4 आवर बाद में बीच में 1 घंटे की आपको ब्रेक मिलती है. 300 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं. 1.5 मिनट या 1 मिनट, बेसिकली 1 मिनट आपके पास होता है टू आंसर द क्वेश्चन. इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. या आप वो अपीयर हो, ये साल में 3 दफा होते हैं. और इसके अलावा अल्बर्टा जैसे प्रोविंस है उसमें एग्जाम सिस्टम नहीं है. वंस यू हैव योर NCA सर्टिफिकेशन, सो you go for articling, internship जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं. आर्टिकलिंग करो. आर्टिकलिंग होती है 1 ईयर की. आपके प्रिंसिपल जो लॉयर होगा उसकी रिकमेंडेशन पर बेस करता है कि whether you go for call to the bar in Alberta or not. And luckily if you get called to the bar in Alberta, और वहां पर आप CPLED होता है, Canadian Professional Legal Education के नाम से उनका एक प्रोग्राम है which is for 9 months. अगर आप वो भी मैंडेटरी है. You have to complete that as well as articling. There's no bar exams there. So once you complete those 2, you are called to the bar in Alberta, which is acceptable in the province of Manitoba, Alberta, Saskatchewan, and Nova Scotia. So you can practice in either of them. So once you are called to the bar in Alberta, you can transfer yourself to any other province. You can come to the Ontario, you can come to BC, you can go to Quebec, wherever you want to go. That is equally acceptable. अच्छा, अब अगर हम कुछ बात कर लें कि जब ये हो जाएगा और आपने बार एग्जाम पास कर लिया, तो फिर आप किस लेवल पर आपको एडमिट किया जाएगा इन द बार? जैसा पाकिस्तान में पहले 2 साल होते हैं कि आप लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, देन यू गो फॉर द हाई कोर्ट, and afterwards, after some time, you can get your Supreme Court license. Obviously, उसकी अपनी कुछ conditions हैं, लेकिन उसके ये steps हैं. तो कनाडा में क्या steps हैं? कनाडा की जो आप लाइसेंस लेते हैं, जो लाइसेंस अभी जो मेरे पास है, like the startup license, जैसे मैं कह सकती हूँ, like I've been called to bar in 2018. So I'm a fresher. I'm a new call to the bar. Though I'm not a new, I have some experiences back home, but that is not counted here.
So जब आप बार में acceptable हो जाते हो, so your that bar license is acceptable all the way to the court of appeal. कोर्ट ऑफ अपील आप ऐसा समझो जैसे यहाँ पर हाई कोर्ट है, हर प्रोविंस की अपनी कोर्ट ऑफ अपील है, एंड दैट इज अ हाई कोर्ट. उसके डिसीजन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो. सुप्रीम कोर्ट इज ऑन द एपेक्स, इज ऑन द टॉप. हर चीज की अपील इवेंचुअली इट विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट. एंड सुप्रीम कोर्ट के जैसे हम कहते हैं कि बेंचेस होते हैं पाकिस्तान में हर प्रोविंस में, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं हर प्रोविंस में, तकरीबन हर प्रोविंस में, नॉट हर प्रोविंस में, तकरीबन हर प्रोविंस में. So, उसका जो है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एडमिशन थोड़ा सेपरेट है, उसकी एक सर्टेन लिमिट ऑफ एक्सपीरियंस है, दैट इज अ मस्ट, स्पेशली अपील्स में. सरप्राइज टू नो कि यहाँ पर लॉयर्स 15-15, 25-25 साल करते हैं प्रैक्टिस एज अ लॉयर, एंड समटाइम्स दे इवन रिटायर एज अ लॉयर, एंड दे हैव नॉट डन एनी अपील in their career. Appeals are rare. Court of appeal har koi nahi jata. It's very costly. It's basically on the law, question of law and question of fact to some extent, but basically question of law is basically taken up in there. Part J appeals are quite common. Part J appeals are in like motion ke upar jo appeal aapki hoti hai, mostly family law mein ya थोड़ी बहुत civil में शायद हो जाए. Part J appeal is basically family law की, वो हो जाती है. But other like proper appeals, it's not everyone goes to the court of appeal that easily, unless or until there are some really litigious matters. जाते हैं लोग लेकिन कम जाते हैं. अच्छा अच्छा, अब कुछ बात हो जाए कि एक्सपेंसेस कितने तकरीबन इस पर बार एग्जाम में अपेयर होने का, या ये इन डिफरेंट स्टेप्स पर हाउ मच एक्सपेंसेस और जहन में रखना चाहिए कि कितने एक्सपेंसेस होंगे? आप आराम से like $10,000 या $12,000 आप माइंड में रख कर चलो for the whole procedure, generally speaking, and I'm talking about the expenses purely for your becoming a lawyer process, all the way from the scratch, going all the way to be called to the bar. However, there are lots of other expenses are associated with you once you are called to the bar. That's a different thing. For example, आपकी assessments के पैसे जो होते हैं, that comes around $450. मैं जितनी भी expenses बता रही हूँ, that's in Canadian dollars, and all are subject to HST. That is a 15%. तो assessment आपकी होती है $400, $450 plus tax. On top of that, जो documentations होगी, जितनी भी documentations gathering है, सब कुछ है, उनकी requirements है, you have to pay out of your own pocket. For example, you have to submit your documents, so all the postage, all photocopies, originals, everything is going to be at your own pocket. So that is not included in it. It's just their fee to assess your thing, your recommendations, and to make an assessment for you. Here, apart from that, they give you a timeline. You have a timeline to complete your assessment, including your bar exams or being called to the bar. You have 5 years to complete it. If you don't do that, and you have passed your NCA, but you have not passed your bar, or you have not been called to any bar in Canada, and you've crossed your 5 years time limit, you're done. You have to apply again. Start everything up from again. Bar exams के $400 each paper plus tax आपका $250 plus tax each paper है. Ontario के जो barristers and solicitors exams हैं, $100 का आपको मिल जाता है material. They provide you material themselves. And that is a digital copy. You have to print it out. You have to do it whatever you want. It's an open book exam. You can take your own notes. You can have your own written notes with you. You can do that. But you are not allowed to take any material out of the examination hall after you have given your exams. So if you failed, you have to buy the whole set again. And mind it, it's digital copy. आपने उसको प्रिंट अपने एक्सपेंसेस पे निकालना है, और अपने एक्सपेंसेस पर वो लाइक 2000, 1050, 600, more than 1000 pages उसके वो pages हैं, and they are on one sided. So once you go for the printing of that, so it costs you a lot of money. फिर then उसकी binding, like I did binding and everything separately because it's very cluttered.
to be organized and to be navigated. So that's another expenses. NCA की books are not covered in that. It's just an assessment. So NCA की जब वो आपको books recommend करते हैं, so you have to go and buy everything at your own. Everything at your own. So those books are also expensive. I spend around $3,000 to $4,000 for those books only. Yeah. So roughly speaking, it's a bit costly. But there are some helps. Sorry to cut you off. There are certain helps in there for you. Like you can, if you are a PR in Canada, like I was a PR in Canada, so I do qualify for some student loan. Or Law Society gives you a loan that if you are in a process and you are not able to earn much and you don't want to spend so much, they give you a loan. They don't cover you 100%, but 70-80%, depending upon your credit history, your income, and your things. So they give it to you, and your status, obviously. So they give it to you. I never took it. I paid everything out of my own pocket. Because you manage things very well. You're a good manager. अच्छा शुमाइला, आपका बहुत शुक्रिया. कोई और बात जो मैंने आपसे ना पूछी हो लेकिन अहम हो जो आप बताना चाहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि lawyers in Canada, for Pakistani lawyers, there's a lot of scope, especially जब Canadian Law Society का जो सबसे अहम part है वो ये है कि you don't need to be here physically. You don't need to have a visa. You don't need to have a PR. You don't need to have anything status in Canada. You can do it from Pakistan. हर ये information बहुत सारे लोगों को नहीं होती. So through you, I would like to give that information to everyone in Pakistan. कि अगर किसी ने यहाँ की license लेना है, so you can apply from there. For अगर मुझे पता होता ये बात पहले, so before me landing in Canada as a PR, I would have done my NCA back home in my own comfort zone. Yes, it's going to be costly, but at least halfway I would have been done, and it would have cut down a lot of time of mine. क्योंकि बहुत आपका टाइम गेन हो जाता है स्टडीज के साथ, मूविंग टू अ न्यू कंट्री, न्यू सेटअप, न्यू रूल्स रेगुलेशंस. इट्स वेरी stressful for some of the people, especially harsh weather, new people, new setup. You don't know anything. You miss out on a lot of things. You don't drive here. You have to do the busing. You miss out your bus, and it's snow, and it's really very stress out for you. So those who wants to come here, those who are planning to come here, please plan it accordingly. Talk to somebody, discuss, do your research properly. So best part is that for the lawyers, एक तो आपका common law का है, that is acceptable, and that you can do like 50% of that work back home rather than coming here and doing that. Then another important part is that all that process, what I've told you so far, does not include IELTS test या TOEFL test. Yes, मैं वो included नहीं है, अभी तक तो नहीं है. I can't say anything about the future. इसमें कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की टेस्ट नहीं है, हालांकि लॉ का सारा काम रिटन है, ड्राफ्टिंग है, एंड ग्रामर इज very important, and English is very important for that. Communications and drafting, it's very important, but they have not taken advantage of that. Third part is that be prepared for all kind of challenges. If you want to jump into a legal profession here, think properly, think wisely. क्योंकि असल स्ट्रगल आपकी बार पास करना नहीं है, असल स्ट्रगल आपका एज अ सक्सेसफुल लॉयर होना है, and that is a real struggle. Without a help of any of your family and your friends that you have back home, you don't have no one here, so you have to do it from the scratch, and network is the key. So that's important. So think over these lines as well. ये आपने बहुत वैल्यूबल बातें बताई हैं कि आप अपने घर में पाकिस्तान में रहते हुए भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये एग्जाम मतलब आप एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आप घर बैठे अचीव कर सकते हैं. ये बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है. थैंक यू सो मच हुमाइला. We wish you all the best with your legal career in Canada. You were very successful back in Pakistan, and we wish you all the best. Thank you so much for being here. Thank you so much. So lovely knowing you and meeting you. Thank you so much.
Thank you. Bye-bye.